पहला कैमरा कौन सा था आपका? फर्स्ट कैमरा, इफ यू कैन, विच एवर कैमरा यू रिमेंबर. मेरा खुद का कैमरा पहला था निकॉन P80, जो पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, डिजिटल कैमरा. बट उसके पहले आई यूज्ड टू यूज डैड्स कैमरा. सो डैड हैड अ फिल्म रोल वाला कैमरा जिसमें वो कोडैक के 36 फोटो आते थे. कभी कभी अगर 37 या 38 आ गए तो इतनी खुशी मिलती थी कि लाइक इट्स अ बोनस, राइट? एंड देन यू शूट एन इमेज, you can't see the result of it right there because you have to wait for the 36 or the 38 shots to get done. Yes. Then take the roll out very carefully, wind it all, take it to the color lab, let them develop it, print it, and then give you copies to realize that you messed up all. yes. Because that's how it worked. So पापा के पास एक रोल वाला कैमरा था, Pentax K1000. My dad was heavily invested into photography even in his childhood. I was looking at some of his albums and pictures that he shot. अभी तो एक पिक्चर में 2 विवेक या 2 मिहिर चाहिए तो iPhone can do it in a matter of seconds and anybody can do it. There's no big trick about it. But my dad did some of those multiple exposure photography in his childhood. कि एक कैमरा रख के डबल एक्सपोजर लेके then you overlap it and then take it to the color lab, get it printed. Dad has pictures of him and his brother, like 2 of them standing here on the frame and again 2 of them standing here on the same frame on the terrace of the building they lived on. So he used to do all that, and I think some of that has kind of gotten translated to me, transferred to me rather. तो पापा के पास वो Pentax था. उसके बाद पापा bought a Kodak DX6490, which was our family's first digital camera. And then I got my own, which was dad's gift, and then I could afford my own, and then I upgraded and stuff like that. So, but yeah, my own camera, if you go to see, Nikon Coolpix P80. So then would it be fair to say कि जब तक आपको पहला कैमरा मिला खुद का, तब तक आप ये सब समझ गए थे, टेक्निकलिटीज समझ गए थे, आईएसओ क्या होता है, अपर्चर, नहीं, शटर स्पीड? Not fair to say that. No, not fair. Not fair to say. Yeah, the reason I asked that question is because my primary question was कि ये Nat Geo देखना, डिस्कवरी देखना, और वहाँ पे because experts are capturing it. Correct. और आपको ये लगता है कि अब मैं भी करूँगा. Now you have a camera in your hand and you try and do that with humans. Even ह्यूमन सही से नहीं आ रहे हैं, जानवर कहाँ से आएंगे? उनको तो आप कमांड भी नहीं कर सकते, राइट? तो द क्वेश्चन वाज कि वहाँ फ्रॉम लर्निंग दैट ये शॉट लेना है से ये टेक्निकल या क्राफ्ट इम्प्रूव करने तक का कितना लंबा सफर था या कैसे किया वो? माय क्वेश्चन वो जर्नी एक सेल्फ एजुकेशन वाला जर्नी था. And of course, internet helps big way. A lot of YouTube tutorials and lot of experts who are into providing education online. You could join those channels and look at those conversations to see what are the basic principles of photography. If you want to go slightly super specialized into wildlife photography, then what is the kind of equipment you need? What are the kind of settings you could play around with? If an element or an animal surprises you, then how do you react in the moment? What stuff you may need to change on the go? Because ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर टाइगर कैप्चर करना है तो ये ISO, ये अपर्चर, ये फोकल लेंथ पे जाओगे तो बेस्ट आएगा ही. ऐसा कोई रूल नहीं है. कभी टाइगर लेफ्ट से आ रहा है, कभी राइट से आ रहा है, कभी झाड़ों के बीच में बैठा है, कहीं खुले रोड पे चल रहा है, कहीं सनलाइट है, कहीं क्लाउडी है. तो नो रूल वर्क्स एवरीवेयर. यू हैव टू अडैप्ट. So I think all of that education and self-discovery happened in a period of 4 to 5 years. When I knew that I had a tool, which was the camera, I needed to up my own skill set. To be able to make the most out of that tool I had. And when I had my first digital camera, which was the gift that dad gave me, I knew that the camera had a lot more to offer than what my skill sets were at. So I knew that I had a catch-up game to play. Camera could do tons of it, but मुझे समझ में आना चाहिए ना कि इसको मैं कैसे इसमें से बेस्ट रिजल्ट निकालूं. एंड आई हैड टोल्ड माई सेल्फ कि मैं ये कैमरा अपग्रेड करूंगा ओनली एट अ टाइम व्हेन आई थिंक कि मेरा स्किल सेट इज बेटर देन व्हाट दिस कैमरा कैन डिलीवर. जब मुझे लगेगा कि ये कैमरा का सारा फीचर्स और पॉसिबिलिटीज मैंने एक्सप्लोर कर लिया एंड आई एम एट अ डिसेंट लेवल कि अभी ये कैमरा मेरे एक्सपेक्टेशन पे नहीं डिलीवर कर पा रहा है, ओनली देन आई विल चेंज द नेक्स्ट कैमरा.
क्योंकि you can buy a 20,000 rupee camera today or buy a 20 lakh rupee camera. It's a tool. If you don't know it, then you can't expect कि just because मैंने 20 लाख का कैमरा ले लिया कल से अच्छी फोटो आने लगेगी, ऐसा नहीं होगा. तो मैंने वो एक कैमरा को बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत टेरिबल फोटोज खींची होगी. And then it kind of went into the self-discovery mode. I learned it, experimented a lot. I will carry the camera almost everywhere I would go. और घर पे भी मैं उसको ऐसा एकदम बॉक्स में पैक करके कभी कबर्ड में उसको रखा ही नहीं मैंने. मेरे स्टडी टेबल पे ऐसे बाजू में रखता हूँ. अचानक अगर बाहर कोई पैरट दिख गया तो आई शुडंट हैव टू थिंक कि अरे यार कैमरा कौन निकालेगा, कौन बैटरी चार्ज करेगा, पता नहीं कार्ड होगा कि नहीं होगा उसके अंदर. That tool should be right here. So I can pick up quickly and before the guy flies out, I can take a few shots to see am I getting this right. क्योंकि कभी कभी हम लोग stuff that we love, we keep it so carefully somewhere that then we get either too lazy to even take it out or the opportunity to use it goes away and then वो parity उड़ गया तो क्या कोई निकालेगा, फिर अगले 2 महीने निकल जाता है. And then you take it out only once in a while when you go out on a vacation. And then you can't expect कि मैं साल में 4 दिन कैमरा यूज करूंगा और मैं एकदम प्रो फोटोग्राफर बन जाऊंगा, ऐसा तो नहीं. तो एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी था, लॉट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड forums and following some of the photographers who I like and admire.